Class 8 Science Chapter 17 starts in the solar system, and in this video we will discuss about the moon. First we will discuss about night sky. When we look at the sky on a dark clear night, we see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright, which appear to twinkle. Twinkle means jagmagana. Some star-like object which does not twinkle are also seen. The objects which do not twinkle are planets. The moon is the brightest object in the night sky. The village sky is very different from the night sky in big cities. Night sky in village is clear, but due to bright light, smoke and dust, the night sky in big cities is rarely clear. Celestial objects. The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. Astronomy, खगोल विज्ञान और ज्योतिष. The study of celestial objects and associated phenomena is called astronomy. In ancient India, our ancestors, means Purvas, performed methodical, that is Vyavasthit, observations of sky. Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. Passage means mark of the sun, stars, moon and planets in the sky helped them to devise calendars and almanacs, means panchang. Okay, I think you are familiar with this word panchang. These were often used by people in their day-to-day conduct and better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing. Sowing का मतलब बीज बोना, and choice of crops, fixing of dates of seasons and festivals. Now come to moon. First we will discuss one activity. Observe the moon continuously for several nights. Preferably, that is specially from one full moon to the next. Full moon means पूर्णिमा, यानी कि आपको एक पूर्णिमा से लेकर के अगली पूर्णिमा तक मून को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है. ओके, मेक अ स्केच ऑफ मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून. यानी कि पूर्णिमा के कौन से दिन जो आपने डायग्राम बनाया है उसको भी आप मेंशन करिए. यानी फर्स्ट डे कैसी शेप बनी, सेकंड डे कैसी शेप बनी. ओके, also note every day the part of the sky east or west in which the moon is seen. Like this in this diagram, this is one student and she is making these diagrams when after observing the moon. Okay, the day on which the whole disk of moon is visible is known as full moon day. Full moon day, Hindi Purnima or Poonam. Okay. Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. यानी कि पूर्णिमा के बाद जो मून का ब्राइट पार्ट है वो कम होता जाएगा. And on 15th day the moon is not visible. This day is known as new moon day. हिंदी में इसको बोलते हैं हम अमावस्या. Clear? You are familiar with these two words, पूर्णिमा and अमावस्या. पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है, अमावस्या को चांद, दैट इज मून, दिखाई नहीं देता है. द नेक्स्ट डे यानी अमावस्या के अगले दिन ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपीयर्स इन द स्काई एंड दिस इज नोन एज द क्रेसेंट मून. ओके, लाइक दिस. देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे and on the 15th day once again we get a full view of the moon. Okay, crescent moon is the growing one which will reach full moon in 14 days, also known as the Shukla Paksham.
हिंदी में आप कह सकते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाले भाग को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ओके, द अपोजिट ऑफ द अबव, द गिबस, गिबस मीन्स ढलना, will lead to the new moon, and this 14-day period is called कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष हिंदी में इसको बोलते हैं, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या के बीच वाले हिस्से को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। सो दिस वैक्सिंग, वैक्सिंग मीन्स ग्रोइंग, ब्राइट पार्ट धीरे धीरे बढ़ता है, एंड वेनिंग मीन्स डिप्लीटिंग प्रोसेसेस अल्टरनेटिवली every 14 days will show the crescent moon and gibbous moon. See this diagram, this is full moon day यानी पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद जैसे ये कम होता जाता है ब्राइट पार्ट, उसको बोलते हैं आप गिबस, दैट इज वेनिंग। ओके, और न्यू मून यानी अमावस्या के बाद जब उसका चमकीला पार्ट नजर आता है तो उसको बोलते हैं आप वेक्सिंग क्रेसेंट, यानी कि ग्रोइंग क्रेसेंट। ओके, इस डायग्राम में फिर देखिए आप, दिस इज क्रेसेंट, ओके, and this is full moon day, and after that full moon day we will reach to the new moon day. So this part from this to this is known as shukla paksh, और यहां से यहां तक कहलाता है आपके पास ये कृष्ण पक्ष। Now phases of the moon, the various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of the moon. Phases of the moon. See this calendar. This is the October 2012. This is full moon day, and then its bright part is continuously decreases. Okay, and on 15th day we are not able to see this moon. This is new moon day, Amavasya. And after next day this is crescent. Clear? और again ये चमकीला पार्ट इसका बढ़ता जा रहा है, again after the 15 days we will get the full moon day. Role of phases of the moon in our social life. Phases of moon play an important role in our social life. Almost all festivals in India are celebrated according to the phases of the moon. For example, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। आप सब जानते हैं दिवाली किस दिन मनाई जाती है? अमावस्या के दिन। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक्स बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, दैट इज पूर्णिमा। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th नाइट ऑफ वेनिंग मून। द सेम वे ईद-उल फितर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रेसेंट मून, यानी कि जिस दिन चांद दिखाई देता है उसके अगले दिन ईद उल फितर सेलिब्रेट किया जाता है। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 days. इन मेनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड ए मंथ. Now question arises, why does the moon changes its shape every day? Or we can say, why phases of the moon occur? The moon does not produce its own light, whereas the sun and other stars do. We see the moon because the sunlight falling on it gets reflected towards us. It is a reflected light. Due to the reflected light, we are able to see the moon. We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. See this diagram. This is the sun. Okay, and when this sun की रोशनी जब पृथ्वी पे आती है, अर्थ के ऊपर आती है, तो ये हुआ आपके पास डे वाला पार्ट, और this is the night part. This is night, and in the night you can say, in this diagram you can see clearly कि sun की लाइट इस पे गिर रही है, ये इसको ब्राइट बना रहा है, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जब नाइट में अर्थ पर आती है तो आप मून को देख सकते हैं। So this is the reflected light, okay, due to which this moon is visible to us. Now there is one activity. Take a big ball, paint half of it white and half black like this. Draw a circle of radius of about 2 meters on the ground. ये एक सर्कल बनाइए आप।
डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ये डॉट दिखा रहे हैं, देखिए 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर इस सर्कल को आप डिवाइड करिए। स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसके सेंटर पे खड़े हो जाइए। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, लेकिन बॉल को होल्ड करते समय कुछ ध्यान रखना है आपको। आस्क योर फ्रेंड टू कीप द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड्स द सन, यानी कि ये जो व्हाइट पोर्शन है इसको हमेशा सन की तरफ रखना है। तो यदि आप मॉर्निंग में ये कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट ईस्ट की तरफ होगा, और शाम के समय कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट अपोजिट वेस्ट की तरफ होगा। एंड द लाइन डिवाइडिंग द व्हाइट एंड ब्लैक पोर्शन इज केप्ट वर्टिकल, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल रहनी, इसी तरह से जैसे इसमें दिखा रखा है। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑब्जर्व द विजिबल व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल व्हाइल योर फ्रेंड स्टैंड्स एट द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब आपको यहाँ सेंटर पे खड़े होकर के इसके व्हाइट पार्ट को देखना है, जबकि ये आपका जो फ्रेंड है इन पॉइंट्स के ऊपर मूव करेगा। कैसे मूव करेगा कि इसका व्हाइट पार्ट हमेशा सन की तरफ रहना चाहिए। ओके, और जब आप इस बॉल को देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स नजर आएगी। ड्रॉ द शेप ऑफ द बेसिस ऑफ द व्हाइट पोर्शन एज यू सी इट, और देन कंपेयर योर ड्रॉइंग्स विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। यू कैन आल्सो सी the moon appears different at different positions in its orbit. The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day, यानी कि अमावस्या के बाद चांद का या मून का जो हिस्सा चमकीला है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आफ्टर द फुल मून डे, यानी कि जैसे ही पूर्णिमा आएगी, द सनलिट पार्ट, यानी कि सूरज की रोशनी जिस पार्ट पे गिर रही थी, पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे, यानी पूर्णिमा के बाद चमकीला वाला भाग कम होता जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए आप, ये इधर से सन रेज आ रही है। ओके, सन रेज जब आपके पास यहाँ गिर रही है इस पे, तो आप ये देखिए अर्थ की तरफ ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट पर सन की कोई रेज नहीं है, तो आपको ये न्यू मून डे यानी अमावस्या जैसे चांद नजर आएगा। ओके, अब जैसे जैसे ये मून रोटेट करेगा इस अर्थ के चारों तरफ, ये क्रिसेंट आ गया अगले दिन। ठीक है, चमकीला पार्ट बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर आपके पास आ गया ये फुल मून डे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सन की सीधी रोशनी यहाँ पर आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखती है। ओके, इसके बाद फिर देखिए आप, ये पार्ट गिबस हो गया। ठीक है, यानी कि इसका चमकीला पार्ट कम होता जा रहा है, वापिस ये कम होता जा रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको ये फेजेज ऑफ मून दिखाई देती है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द अर्थ अलोंग विद मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फिर डायग्राम देखिए आप, ये मून इसके अंदर अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और ये अर्थ मून के साथ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। क्लियर? सो वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। कभी भी मून का पीछे वाला हिस्सा आपको नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? देखिए, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज द सेम एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून अबाउट इटसेल्फ। देखिए, दो वर्ड हमारे पास आ रहे हैं, एक आ रहा है रिवोल्यूशन और एक आ रहा है रोटेशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, और रोटेशन का मतलब होता है अपने एक्सेस पे, यानी ये मून अपनी जगह पर भी अपनी जगह पे भी घूमता है, उसको बोले आप रोटेशन। ठीक है, तो अपनी जगह घूमने का टाइम और इसके अर्थ के चारों तरफ लगाने का टाइम वो लगभग सेम है। Okay, so the period of revolution of the moon around the earth is the same as the period of rotation of the moon about itself. That is, the moon makes one revolution around the earth in about every 29 days, and it also rotates once every 29 days also. यानी कि इसका रोटेशन यानी अपने एक्सेस पे भी 29 डेज में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है, और अर्थ के चारों तरफ भी 29 डेज में अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। दैट्स व्हाई वी कैन नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। नाउ देयर इज वन एक्टिविटी, ड्रा a circle of about 1 meter diameter on the ground.
Ask one of your friends to stand at the center of this circle. You revolve around your friend in such a manner that your face always remains towards him. Can your friend see your back? देखिए वापिस एक सर्कल आपको बनाना है, ठीक, और ये आपका फ्रेंड यहां पर सेंटर में है और एक दूसरा फ्रेंड और आपको रिवॉल्व करना है यहां पर, इसमें रिवॉल्व करना है इसके चारों तरफ। और आपका क्या करना, आपका फेस हमेशा इस तरफ रहना चाहिए। जब आपका फेस हमेशा इस तरफ रहेगा तो ये आपके पीछे वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा, ठीक है। सो आपका आंसर क्या होगा, नो माय फ्रेंड कैन नॉट सी माय बैक। देन हाउ मेनी रोटेशन डिड यू कंप्लीट इन वन रिवोल्यूशन, यानी कि जब आपको फेस इस तरफ रखना है तो आपको अपने पोजीशन के ऊपर, यानी आपको यहां पर भी घूमना है और साथ में इसकी चारों तरफ भी घूमना है। तो ये तो गलत है रोटेशन, और जब चारों तरफ घूम रहे हैं इसको बोलते हैं आप रिवोल्यूशन। तो आप देखेंगे वन रोटेशन इज कंप्लीटेड इन वन रिवोल्यूशन। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सिमिलर मैनर। So we can conclude that moon completes one rotation on its axis as it completes one revolution around the earth. Moon's surface. The moon is fascinating. Fascinating means charming, आकर्षक, object for poets and storytellers. But when astronauts means अंतरिक्ष यात्री, landed on the moon, they found that the moon's surface is dusty, यानी कि धूल भरी हुई, and barren means बंजर, जहां पर कुछ उगाया नहीं जा सकता। There are many craters means large holes in the ground of different sizes. It also has a large number of steep and high mountains, यानी कि गहरे सीधी ढलान वाले और बहुत हाई इनके माउंटेन्स है यहाँ पर। देखिए ये वाला डायग्राम सर मून सरफेस को दिखा रहा है, देखिए दीज आर द क्रेटर्स दिखा रहे हैं आपके पास, ये बहुत बड़े बड़े। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, इट हैज नो वाटर, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून। Again, if you are asked why life cannot exist on the moon, your answer is this: there is no atmosphere, there is no water. Okay, and when there is no atmosphere, we cannot hear any sound on the moon, because to travel the sound medium is required. On the moon, no medium is there. On July 21st in 1969, Indian time के according, the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon for the first time. He was followed by Edwin Aldrin. Clear? Okay. Thank you. Subscribe my channel to get the next video from this chapter.